ओके, नाउ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन का, देखो उसमें से हम कंक्लूजन्स विल बी कमिंग फ्रॉम दैट. A source of light and a screen are placed 90 centimeters apart. एक source of light is there and screen. Okay. So distance कितना है? 90 centimeters. This is screen. Where our image is formed on the screen. Okay. Where should a convex lens of 20 centimeters focal length is placed in order to form a real image of the source on the screen? मुझे कॉन्वेक्स लेंस किधर रखूं, कौन सा पोजीशन फ्रॉम द सोर्स रखूं, सो दैट एग्जैक्टली रियल इमेज शुड फॉल, रियल इमेज शुड फॉर्म. मान लो आई प्लेस्ड ए कॉन्वेक्स लेंस हियर सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ओके, ये डिस्टेंस को आई कॉल्ड एज एक्स. सोर्स से एक डिस्टेंस को रिमेनिंग विल बी हाउ मच? 90 minus x. ओके, सो मान लो फ्रॉम हियर टू हियर x है and from here to here 90 minus x है because total is 90, right? So here real image is formed. He is telling to find the value of x. He is telling to find convex lens is placed in order to form a real image on the screen, on the source on the screen. Okay, now x value we have to find. किधर रखेगा तो exactly you will get a real image on the screen. So we'll use the formula, lens formula. U is how much? Of the distance is how much? तो इधर से source है ना, incidentally like this. So you're taking from back side, so minus x. And your v is how much? Incident ray direction only it is there, right? How much? 90 minus x. They given. And focal length of convex is positive, and they given as how much? 20 centimeters. Now use the formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Now substitute the values and find the value of x. You will get some quadratic equation and find the value of x. So we have to find the value of x where exactly if I put, we'll get a real image on the screen. So 1 by 20 is equal to 1 by 90 minus x minus of minus plus 1 by x. No friend. Take LCM वगैरह and solve value of x. So minus 60 and minus 30. No. Plus 60 and plus 30. हाँ. करो. Got it? So x equal to plus 30 or plus 60. Okay. Now you have to understand that there are two positions are there. There are two positions of the convex lens will be there always to form a real image on the screen. Okay, always कभी भी source, convex lens and screen. आपको दो positions are there. One is 30 centimeters लगाए तो भी real image आ रहा है, or I move this convex lens to 60 centimeters, then also the real image is formed. Okay, so लिखो, and इसका relationship also is there. There are two positions of convex lens between source and screen for which real image is obtained on the screen. Suppose मान लो, if the two positions are x1, x2 from the object. Okay, so this is a two position, one position here, one position here. This is a screen. Okay, object here. मान लो x1 distance है and a x2 distance है. Second lens will be position is x2 distance. Object से lens का distance है. Two positions are there. Okay, and distance is d. Object से screen का distance is d. So always we have two positions. Object से कितना x1 में हो सकते हैं
or x2 where the real image is formed, and distance between the object and the screen is d. Now we have relation between them. What is the first relation? x1 plus x2. अगर दोनों ऐड करूंगा, that will be exactly equal to distance between the so object and the screen. Okay, and this is screen. And second relationship आपको मालूम पड़ने का, x1 into x2 is equal to f into d. Is a relationship between them. So whenever the two positions बताओ बोले तो you can use this relationship and you'll get the answers. F is a focal length and d is the distance between object and the screen. अब बेटा चलो ना करो. A screen is placed at a distance 100 centimeters from the object. A screen है, object is there 100 centimeters दूर में I place object. The image of the object is formed on the screen by convex lens at two different locations. Okay, at two different locations में image is formed on the screen. Okay, which are separated by 20 centimeters. The separation is given as 20 centimeters. We know x1 is from here to here, x1 है, and x2 is from here to here, x2 है. Okay, calculate the focal length of the lens used. A focal length is so much. Okay, now use any relationship. देखो, we know x1 plus x2 is equal to d. D is 100. The first relationship. Okay. From the diagram में, what is x2 minus x1 is 20, right? So x2 minus x1 is equal to 20. Now solve करो. So Find x1 60 x2. x2 is 60 60 and 40. Okay, f is how much then? Focal length I want. Focal length I want. 24 is answer. F equal to 20. Yes. आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes. Now combination of lens and mirror. Okay. तो अच्छे से करो, इधर कॉपिंग करो, combination of lenses. And whenever combination comes, I told you, first image, first lens को होने दो, first mirror को होने दो, उसका image will act like a virtual object for the second lens. And again we have to apply lens maker formula 2-3 times. How many lenses are there? That many times you have to apply. Okay. But आपको sign conventions very important, otherwise wrong हो जाएगा. Sign conventions लगाने, right? करो. Study करो, neatly करो, without copying करो. हम क्लास करो. You show the steps also पूरा. If you copy, what is the use? Tell me. करो. अब मैं कुछ अवार्ड देने वाला हूँ नहीं है ना. करो, आपके लिए करो. एग्जाम विदाउट सिंग करो. फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज. मतलब मैं आपको क्या करने का, फोकल लेंथ इज गिवन, ऑब्जेक्ट इज गिवन, use the lens formula and find the image that is acting like a virtual object for this one. Again apply the lens formula to get the final image. Karo. And then shortcut formula, right? UF by U plus F. We can use UF by U plus F. So for lens A का क्या है? U is how much? A incident है ना? Objects विधर है, is उल्टा है ना? We are taking -10. F is 20 centimeters and V find करो. UF by U plus F. So V is equal to -10 into 20 by 20 minus 10 is 10.
20/3. -20, ओके देखेंगे। -20 मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, ये इधर पीछे आएगा, राइट, -20, राइट, दैट मीन्स इधर से 20 सेंटीमीटर दूर में पीछे आया। नाउ इसको भूल जाओ। नाउ दिस, फॉर दिस लेंथ इज एक्टिंग लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स है, 5, 10 or 5 and 20, 25, right? So u is -25 centimeters and f is 5 centimeters. Khatam, v find karo again. How much you got? 25/4. 25/4, huh? Okay. Decimal mein? How much you give? How much you got? 6.25. 6.25, right? 25/4 is 6.25. आया श्रीराम? सो इसका लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का, एंड यू चेक वेयर द इमेज, अगर प्लस आए तो इधर आता था, सो आपको वेरी इंपॉर्टेंट उसके वी हैव टू सी, अदरवाइज साइन कन्वेंशन विल चेंज। हाँ करो। A convex lens of focal length 20 centimeters and concave lens 15 centimeters are kept 30 centimeters apart. So convex lens bhi hai, concave lens also is there. So they are placed where 30 centimeters apart. 30 centimeters apart. Okay. And its focal length is given as 20 centimeters. And concave lens ka focal length is 15 centimeters. Okay. Axis coincides. When the object is placed 30 centimeters in front of the convex lens, object is placed 30 centimeters in front of the convex lens. Calculate the position of final image formed by the combination when the object were 30 centimeters in front of the concave lens. No, something wrong. Find the position of final image of the combination. इधर तक वाले, ये नहीं है, हाँ इधर तक. So first lens का फॉर्मूला यूज करके चेक करो where is image formed. Is it -0.8? 0.8 है, no -12. no. फर्स्ट वन का v कितना है? +6. +6 no +60. +60 +60. So +60 फर्स्ट वन, फर्स्ट लेंस का +60, मतलब मीनिंग क्या है? सो इसका इधर इधर गिरेगा, राइट, इसका इमेज विल फॉर्म आई डैश मान लो. ओके, ऑब्जेक्ट से ठीक है, आई डैश इज नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, राइट.
ओके नाउ सी रे डायग्राम देखो, इधर से आया होगा एंड रे इज कमिंग लाइक दिस एंड अपीयर टू पास थ्रू दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट. सो इस लेंस को रेस किस तरफ इधर से आ रहे हैं ना, दिस डायरेक्शन टेक एज पॉजिटिव. रेस आर कमिंग लाइक दिस राइट. Okay. Now here image distance for this one, object distance is how much? For this one, इधर से इधर तक object distance how much? UV is how much? Plus 30 or minus 30? You are measuring from optical center to the image, right? So to the object, right? So plus 30. समझ आया? Always हम लोग सोचेगा U is minus minus, ऐसे नहीं. आपको this इस lens को the rays are coming like this. मतलब this direction you take as positive. Here the object distance is also measured in the same direction, right? So that's why U is positive. And F is minus 15, right? Concave का minus है ना? Now find V. minus 30. UF by minus 30. UF by U plus F. Reduce. So आपको sign conventions बहुत important है. Hidash is acting like a virtual object, but rays को if you see, the rays are coming from here. That means that direction आपको positive लेने का. Okay, and the object distance is same direction you're taking, right? That's why. Okay. चलो ना करो. From the ray diagram shown below, calculate the focal length of the concave lens. Concave lens, focal length चाहिए. Now for the second lens में image distance किधर form हो रहा है? For second lens, image distance किधर form हो रहा है? It is going parallelly, मतलब infinite. So for this when lens you're applying, the V is infinity should take. Okay. First same concept लगाओ and solve. So 20. No, wrong. Minus. Yes. So V कितना है? First V is how much? 30. 30 centimeters, right? V 30 Yes. है. Now 30 means from उसका उधर से कितना दूर है तुम्हारा? From here से कितना दूर है? ये 10 है ना? And here 20. Right? इधर से 20. So now ये वाला this is a new object, virtual object, right? For them. Now apply करो same concept. The ray for this lens, the rays are coming like this. This direction you take as positive, and here object distance is 20. So U is plus 20, and V to infinity है, because the rays are going parallelly. So now focal length you can find by using the formula. 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. So F is minus 20 is answer. Right? Suppose in this combination of lens में, suppose if I want to find the total magnification, then क्या करेंगे? Simply combination of lens में आपको add M1 plus M2 plus M3. No. So कोई भी सिस्टम मिरर होने दो, लेंस होने दो, M is equal to M1 into M2 into M3 so on. ऐसे मल्टीप्लाई करने का, कॉम्बिनेशन में कभी भी मल्टीप्लाई करने का. ओके चलो M1 मल्टीप्लाई का. हाँ नो पावर ऑफ लेंस. टेल मी पावर ऑफ लेंस में व्हाट इज द फॉर्मूला वी लर्न? फॉर मिरर में इट इज माइनस 1 by F, राइट? फॉर लेंस में P equal to 1 by F.
And you know definition of the power of lens, right? Firstly, power definition. Ability of the lens to converge or diverge a beam of light passing through it. कितना converge कर सकते हैं हमारा लेंस, कितना converge कर सकती है और diverge कर सकती है, that is called power of lens. And power of lens का फॉर्मूला है P is equal to 1 by F. पर मिरर में P equal to -1 by F. Okay. Now same way, suppose मान लो you have कब बेटा? Same way, suppose you have two thin lenses in contact. Okay, two thin lenses in contact. Then how to find the equivalent focal length? What is the formula? When two thin lenses are in contact, ऐसा. F1, F2. आपको total equivalent focal length will be given as 1 by F equivalent is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. Always. Focal length will be simply by which sign conventions you have to use. Okay. 1 by F1 plus 1 by F2 whenever two lenses are in thin contact. And equivalent power is, इसका equivalent power कितना होगा? 1 by F equal to P1 plus P2. This is a P equivalent power. Whenever 2, 3 कितना भी होने दो, P equivalent will be P1 plus P2 plus P3. Because sometimes object distance will be given. He will tell to find image distance. But two thin lenses contact. Focal length कौन सा यूज करेगा? इसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा means effective focal length we have to use and use the lens maker formula and solve. Lens formula and solve. Okay. P1 plus P2. करो. इसका focal length is 10 centimeters. इसका focal length is -20 centimeters. And object distance is 10 centimeters. He is telling to find the lateral magnification produced by the combination of lenses. I want lateral magnification कितना होगा. तो उसके लिए आपको पहले मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला मालूम है ना? M is equal to V by U, right? ओके. और ठीक है V by U. So V फाइंड करने का, so उसके लिए आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करो. फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फर्स्ट. 1 by F equivalent is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 and solve F equivalent and object distance is -10, right? Find V. So my equation is 2. My equation is 2. So F equivalent, how much you got? 20 centimeters. Use the formula. V is equal to UF by U minus F. UF by U plus F, right? Now solve करो. And all values you substitute, you'll get the value. कितना है? क्योंकि? +2. +2. Yes, Ram. Next. So कभी भी combination में always take the equivalent focal length and use that one. Okay. Suppose मान लो special case is there where two thin lenses are separated by distance d. लिखो. Two thin lenses separated by distance d. So they are not contact. L1, L2 separated by distance d. And इसका refractive index is mu. In that case में इसका focal length is f1, इसका focal length is f2. In that case में I want to calculate the total f equivalent. 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by mu times of f1 f2. This is the formula we have to use.
when two thin lenses are separated by distance d and refractive index mu है तो लेते हम फॉर्मूला यूज करने का 1/f1 plus 1/f2 minus d by mu1 times f1 f2. Copied? Cutting of lens. लेंस को कट किया तो you have two cases cutting of lens में. When lenses are cut perpendicular to principal axis, tell me what will happen to the focal length when I cut parallel to the principal. This is principal axis, right? Parallel to principal axis I cut. इसका focal length मान लो f. So after splitting, इसका focal length कितना होगा? इसका focal length कितना होगा? Okay, दोनों तो equal तो होगा compulsory. Okay, so I call small f, small f. What is the relation between f and small f value कितना होगा? Tell me. Small f value कितना होगा? I get perpendicular to the principal axis. At that time, what will be the new focal length in terms of f में? In terms of f में, I want new focal length. अगर 10 centimeters है, exact बीच में cut करूँगा. This will be how much? This will be how much? 5 and 5 मत बोलो. हाँ. 10 centimeters only. Hmm? It will remain unchanged. 10 centimeters. Unchanged? You tell me something. Unchanged. देखो, use ये दोनों combine किया तो will get this one, right? So what is the effective focal length here? Effective focal length use करो. 1 by f is the effective focal length. 1 by f plus 1 by f. So 1 by f is equal to 2 by f. So therefore f is equal to 2 times of f. Double हो जाएगा. मतलब this will be 2f. This will be 2f. If 10 centimeters का exactly cut करूँगा, तो this will be 20 बढ़ जाएगा. 20. Okay, then. Okay, चलो. Next case 2. If the lens cut along the principal axis, now tell me. If a lens is cut along the principal axis, ऐसे कट करूँगा. इसका फोकल लेंथ है f. मतलब ऐसा एक पीस बन जाएगा. Another. It remains changed. It remains same. Why? Because Why? both form a circle. They extended both form a circle. ये फॉर्म हो तो क्या होगा? Well, so anyway, practical, but answer is right only. Why it remains same? देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला याद है? सादिक बोलो. 1 by f is equal to, tell me. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. That is not lens maker formula. That is thin lens formula. Lens maker formula. We are using for preparation of lens. हम बोलो शिवेंगे. 1 by f is equal to Mu L by mu m minus 1 into 1 by Ah. R1 minus 1 by R. So if it is air, mu L by mu m is 1, right? So mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Very important. This is lens maker formula. Thin lens formula is जो भी 10th class पढ़ा, that is thin lens formula. Okay. Now देखो, when you cut इसका radius R1, R2 तो same है. R1, R2 same है. Refractive index also will be same, right? So focal length also will remain same. So along the principal axis cut करूँगा, the focal length will remain same. देखो, focal length remains same.
डन। चलो सिल्वर लेंस आता है ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पता आता है। ओके देखो ये भी एक्चुअली वी थॉट टू रिमूव बट जेईई मेंस क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। सी 2 क्वेश्चंस पक्का आने वाला है। 2 क्वेश्चंस कॉर्नर कॉर्नर में आप पूछेगा तो भी आपको करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट लिविंग एनी स्मॉल स्मॉल थिंग दैट तो लेट होने भी पर करने का। ओके सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस मींस जनरली कैसा रहेगा, दिस इज अ लेंस राइट, इसको वन सरफेस को आई विल डू सिल्वरिंग, मतलब नथिंग बट दिस एक्टिंग लाइक ए मिरर, वन साइड इज एक्टिंग लाइक ए मिरर, सिल्वरिंग बोलते हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस बोलते हैं। ओके सो हियर ऑब्जेक्ट आई एम पुटिंग ओके वन सरफेस, इसको एक्चुअली कैसा कैसा इट इज सेम एज देखो लेंस है एंड हियर इज ए मिरर, इसको if you analyze this is acting like this, one mirror and one lens, silvering of lens किया तो उस तरफ मिरर जैसे एक्ट होगा। सो ऑब्जेक्ट इधर रखने से क्या होगा, रे जाएगा, दिस कन्वर्जिंग लेंस राइट, कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज थोड़ा होगा एंड रिफ्लेक्टिंग राइट, रिफ्लेक्ट करके अगेन कन्वर्ज करके आएगा। ओके नाउ इफ यू सी हियर हाउ टू सॉल्व, आपको इमेज फाइनली आपको किधर से दिख रहा है किधर से, दिस कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज एक्ट लाइक ए मिरर, दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक ए मिरर। भाई आपको ये फाइनल इमेज आपको कैसे दिख रहा है, दैट मिरर से आ रहा है बोल के लगेगा आपको, मिरर्स फाइनली। सो दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक ए मिरर, लिखो दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक ए मिरर, मिरर जैसे एक्ट होगा। ओके सो आपको पॉइंट्स लिख लो, ये आपको जनरल मेथड बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। फॉर्मुला साथ दे, फॉर्मुला शीट में डाल दिया, उसमें कॉन्वेक्स में कैसे डालने का, ये कैसे, वो शॉर्टकट फॉर्मुला दिया है, बट थोड़ा जनरलाइज एक्सप्रेशन का फॉर्मुला मेथड यूज करो, देन आपको इजी हो जाएगा कभी भी ऐसे मेथड करने का। ओके सो फर्स्ट स्टेप लिखो, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सिल्वरिंग ऑफ लेंस में फर्स्ट स्टेप लिखो, सिस्टम कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए मिरर, फर्स्ट लिखो सिस्टम कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए मिरर, ऑलवेज सिल्वरिंग ऑफ लेंस में system combination will behave like a mirror. Second step, find equivalent focal length of this system, find equivalent focal length of this system. Second step क्या है, आपको equivalent focal length find करने का, इस सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का equivalent focal length. Next, third step, apply mirror formula to get the final image, final position of image. Apply mirror formula to get the position of image. So what is the formula it is? 1 by f equivalent is equal to 1 by v. Mirror formula only it is, right? It's acting like a mirror only. 1 by u. 1 by f equivalent is equal to 1 by v plus 1 by u. Now here आपको टोटल पावर इक्विवेलेंट कैसा आएगा टेल में, पावर इक्विवेलेंट विल बी, किसका किसका पावर ऐड करेंगे टेल में, पावर इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर, वही है और रॉन्ग टेल में, टोटल पावर ऑफ द सिस्टम कॉम्बिनेशन का टेल में टोटल पावर विल बी, ये लेंस से जा रहे हैं, मिरर से जा रहे हैं, अगेन लेंस से जा रहे हैं, सो दैट्स पे आपको 3 पावर ऐड करना पड़ेगा। वी नो ऑलरेडी पावर इक्विवेलेंट विल बी ऑल एडिशन, किसका एडिशन, ये 3 ऐड करने का। सो लिखो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, दिस इज टोटल पावर ऑलवेज सेट एट 3 कॉम्बिनेशन जैसे एक्ट होगा। एंड यू नो P equivalent is nothing but for mirror, this is acting like mirror, right? This equivalent is acting like a mirror. Mirror का फॉर्मूला क्या है in terms of focal length? minus 1 by f equivalent, right? This is the mirror का फॉर्मूला is minus f 1 by f, right? focal length है, इसका इसका तो 1 by fl, mirror का focal length will be minus 1 by focal length of the mirror plus lens का फॉर्मूला will be 1 by fl.
equivalent focus is equal to equivalent focal length is equal to this one. So ये method follow करके we have to solve the questions. So since system is acting like a mirror, always you have to use mirror formula 1 by f equal to 1 by 1 plus 1 by 2. आपको 1 by f equal कैसे आएगा? See will tell directly find the image, final image. आपको फाइनल इमेज के लिए f equivalent चाहिए ना. f equivalent कैसे आएगा? We have to use this one 1 by f equivalent minus f equivalent. This one we have to use always. तीनों लेंस का एयर करके आपको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करके we want f equivalent. After that use this one as mirror form. Okay. The general method, any silvering there is, you have to use this general method. I given formulas for shortcut formulas. अगर lens and mirror as a combination में use that to find the image ऐसा. Okay, you will see. चलो इससे पहले one more question I'll give try silvering. इसके बाद खत्म instruments only कुछ नहीं. So this object distance I given as 10 centimeters. Okay, ये silvering किया है. And refractive index of the lens they given as 1.5. And इसका radius also given r equal to 10 centimeters. And इसका radius also given r equal to 10 centimeters. He's telling find the position of the final image formed. Try करो. So आपको क्या करने का? Whenever silvering is there, this combination behave like a mirror. So P equivalent से start करो. P equivalent is equal to किसका किसका ऐड करने का? लेंस का, because रे डायग्राम ऐसे है ना, बाद में ऐसा ऐसा आएगा, राइट? सो लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस. And you know here 1 by f equivalent is equal to 1 by focal length of the lens minus 1 by focal length of the mirror plus 1 by focal length of the lens. Now solve. Now find the value. Now focal length of the lens मालूम है? Focal length of the lens मालूम है? No. But देखो refractive index is given, R1 is given, R2 is given. How to find focal length of the lens? R1, R2 is given. लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके एफएल फाइंड करने का. एंड मिरर का फोकल लेंथ कैसा आएगा? यू नो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, राइट? बाय 2. क्या तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आएगा. यूज साइन कन्वेंशन एंड सॉल्व. फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए वी हैव टू फाइंड ऑलवेज एफ इक्विवेलेंट, देन ओनली वी कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला एंड सॉल्व. एफ इक्विवेलेंट बोलो पहले. -10/3. नो रॉन्ग. एफएल कितना है लेंस का फोकल लेंथ? 1/20. नो रॉन्ग. So for lens, it's -10. 10 आएगा. एफएल इज 10. नाउ मिरर का फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव, राइट? सो एम इज -5. सो एफएम इज -5 So 2.5. and
2.5. Answer, Yes. F equivalent. Taking. So substitute your values. Find V also. So after that mirror formula use करने का 1 by F equivalent is equal to 1 by V plus 1 by V. F equivalent is minus 2.5. Yes. Minus 5 by 2 बोल के लिख देते easy हो जाएगा. Then use the mirror formula and find V. Is V minus 10 by 3? Yes, correct, perfect. Yes. आया? F equivalent आने के बाद सीधा हम you have to use the formula this one by V plus 1 by U. U मालूम है minus 10 बोल के. F equivalent मालूम है. You substitute and get the V. Always. See, always silvering of lens will behave like a mirror. Always. So use total power and उधर से start करो. Find F equivalent and use the lens mirror formula solve V. Okay. चलो. One more question करो. Silvering of lens. He can give anything. Okay, silvering. इसका refractive index is 1.5 and object is placed 24 centimeters from the lens and radius of curvature of one face. Radius of curvature they given as 12 centimeters. And इसका radius of curvature मालूम है ना, plane mirror का radius of curvature infinite. use करो. He's telling to find where will be V found. V. So by seeing you should understand it is a silvering of lens. On the video Sasik. Is this final V minus 24? आ गया. Very good, nice. Sasik, F equivalent how much you got, Sasik?
That's equal to I got 12. minus 12 आएगा F equivalent because always F equivalent will be minus only because it acting like a mirror. So minus मत बोलो always. And now mirror formula use करो. I got the answer. Yeah, minus 24 centimeters. Okay. And ये आपको 18th फॉर्मूला बाय ऐड करने का 18th में गिवन फॉर्मूला शीट में देखो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी ऑफ ए लेंस का. सो आपको टू केसेस आर देयर. वन इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला आपको बाय ऐड करना हो एंड मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला बाय ऐड करो. दोनों हो जाएगा. ओके तो मैं parallel to principal axis and perpendicular to principal axis. That formula use करने का. So velocity of the image minus velocity of the lens is m square times of v naught minus vl. We done for spherical mirrors, right? A lens में lens का. Okay. And similarly, if is moving perpendicular to the principal axis, use viy is equal to m times of voy. Okay. ये दो ही केस आएगा. Okay. खत्म. We left with only optical instruments. 2 classes में हो जाएगा सक्सेसफुल.